Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies. So today we are going to do our chapter 10, which is artificial intelligence. And we all know that artificial intelligence की ability होती है of the machines to think, learn, and behave like human beings. Let's learn about this in detail in this chapter. The name of our chapter is artificial intelligence, and the topics which we will discuss in this lesson are branches of AI, robotics, domains of AI, and natural language processing. Now we have an amazing thought, which is we learn wisdom from failure and much more than success. Let's do this activity in which we have to make a list of robots which are created in India. Also, they are manufacturing here. So the first one is Manav in 2014, and next is Rio Mitra in 20. So Kavya says, tell me what we are going to learn in this chapter. Then he replies, yes, Kavya, in this chapter we shall learn about various branches of artificial intelligence and domains of AI such as data science, natural language processing, and computer vision. So let us begin the chapter. Artificial intelligence एक intelligence है perceiving, synthesizing, and interfering information demonstrated by machines as opposed to intelligence displayed by humans. So AI human machine interactions refer करते हैं to the contact between humans and machines to fulfill a specific task या फिर operation. In human machine interactions, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं इन कम्युनिकेशन. मशीन इटसेल्फ हम उसे कंसीडर करते हैं एज हार्डवेयर, and the interface should be user friendly. It will be built upon tangible and attentive user interface principles. Data को हम access कर सकते हैं through software and store कर सकते हैं on storage devices. At present, we are surrounded by different kinds of machines with AI. For example, air conditioners, computers, smartphones, biosensors, video games, etc. And the development of artificial intelligence to a large extent will benefit mankind in various aspects. Now, branches of artificial intelligence क्या है? AI एक combination है of various computer science fields, and वहाँ पे बहुत सारी branches है AI के. The figure given shows various subsets of artificial intelligence. तो artificial intelligence के अंदर हमारे पास symbolic learning और machine learning आता है. That means symbolic learning में image processing होती है और machine learning में pattern recognition. सिंबॉलिक लर्निंग में हमारे पास आता है कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स. मशीन लर्निंग में वी हैव डीप लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल लर्निंग. कंप्यूटर विजन के अंदर वी हैव स्पीच रिकॉग्निशन एंड एनएलपी व्हिच इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एंड स्टैटिस्टिकल लर्निंग में वी हैव सीएनएन व्हिच इज convolutional neural network and RNN which is recurrent neural network. कंप्यूटर विजन आता है अंडर CNN. तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक सब फील्ड होता है एआई का जो यूज करता है एल्गोरिदम्स को ट्रेन्ड ऑन डेटा सेट्स ताकि वो क्या क्रिएट कर सके, कुछ मॉडल्स क्रिएट कर सके जो एनेबल करते हैं हमारी मशीन्स को टू परफॉर्म टास्क दैट वुड अदरवाइज ओनली बी पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, जैसे कैटेगराइजिंग इमेजेस, एनालाइजिंग डेटा या फिर प्रिडिक्टिंग प्राइस फ्लक्चुएशन. टुडे मशीन लर्निंग एक बहुत कॉमन फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड ऑफन पावर करता है मेनी ऑफ द डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज वी यूज एवरी डे. तो मशीन लर्निंग एक एबिलिटी है टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस रेदर देन जस्ट इंस्ट्रक्शन. ये ऑटोमेटिकली लर्न करता है और इम्प्रूव करता है खुद को फ्रॉम इट्स आउटपुट. मशीन लर्निंग मशीन्स को टीच करता है टू लर्न ऑन देयर ओन एंड मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन प्रीवियस इनसाइट्स. जो टेक्नोलॉजी है ये डिस्कवरीज such as web search, speech recognition, automatic vehicles, ये सब रिजल्ट है ऑफ मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं ऑफ डेटा दैट आर प्रोवाइडेड टू द मशीन, दैट इज लेबल्ड डेटा एंड अनलेबल्ड डेटा. तो लेबल्ड डेटा के पास दोनों चीज होती है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, एंड वो कंप्लीटली मशीन रीडेबल पैटर्न में होते हैं बट रिक्वायर करते हैं लॉट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू लेबल द डेटा टू बिगिन विद. और अनलेबल्ड डेटा में यहाँ पे सिर्फ वन या फिर नन पैरामीटर होता है इन द मशीन रीडेबल फॉर्म. दिस नेग्लेक्ट्स द नीड फॉर ह्यूमन एफर्ट बट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में हमारे पास आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग. पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसके अंदर मशीन को ट्रेन किया जाता है विद लेबल्ड डेटा. यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा सेट्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ टीचर एंड उनका रोल होता है टू ट्रेन द मॉडल और द मशीन.
नाउ वंस द मॉडल गेट्स ट्रेन, जब एक बार हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है, वो स्टार्ट करता है प्रिडिक्शंस बनाना या फिर डिसीजंस लेना जब भी कोई न्यू डेटा उसको दिया जाता है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग को हम ऑफनली यूज करते हैं टू क्रिएट machine learning models used for prediction and classification purposes. For example, suppose आपको एक मशीन चाहिए to identify the vehicles such as motorcycle, auto rickshaw and cars crossing in a day. तो ये जो व्हीकल्स है इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय नंबर ऑफ व्हील्स। जैसे मोटरसाइकिल में 2 व्हील होती है, ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स होती हैं और कार में 4 व्हील्स होती है। नाउ ये जो डेटा है वो मशीन के अंदर फेड किया जाएगा या फिर मॉडल के अंदर टू ट्रेन इट, एंड द मॉडल आइडेंटिफाई करेगा व्हीकल बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंसेस या फिर लेबल डेटा दैट इज नंबर ऑफ व्हील्स। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है जहां पे जो ट्रेनिंग डेटा है is unknown and unlabeled. There is no supervisor या फिर वहां कोई टीचर नहीं होता in this learning. Hence, predictions are based on unlabeled data. ये aim करता है to detect hidden features in data to more or less similar to each other. Now, unsupervised learning is oftenly used by researchers and data scientists ताकि वो identify कर सके patterns within large unlabeled data sets quickly and efficiently. Let us take an example of unsupervised learning as a baby and her family dog. So she knows and identifies her dog. Few weeks later, जो family friend है, वो bring along करती है dog को and try to play with the baby. Baby has not seen the dog earlier, but वो recognize करता है बहुत सारे features जैसे 2 ears, eyes, walking on 4 legs are like her pet dog. Now वो identify करती है the new animal as a dog, and this is unsupervised learning जहाँ पे उसको नहीं सिखाया गया to learn from the data. In this case, data is about a dog. फिर आता है reinforcement learning. Reinforcement learning एक ability है of an agent ताकि वो interact कर सके with the environment and find out what is best outcome. तो ये यूज करता है trial error method to train algorithms and create models. यहाँ पे जो एजेंट है उसको रिवॉर्ड किया जाता है या फिर पेनलाइज किया जाता है with points for a correct or a wrong answer, and on the basis of positive reward points gained जो मॉडल है वो खुद को ट्रेन करता है. Now, once trained, it will be ready to predict the new data presented to it. For instance, एक algorithm है may be optimized by playing successive games of chess, which allows it to learn from its past successes and failures playing each game. So, what is deep learning? Have you ever wondered कि जो YouTube है, Netflix है, ये सब कैसे able होते हैं to figure out the favorite videos, songs, movies और cartoons and give us appropriate recommendations? यानी कि जब भी आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हो तो वो आपकी आप जो भी वीडियोस देखते हो जो अट्रैक्ट करती है आपको, उनके रिकमेंडेशंस ये कैसे शो करते हैं. तो हाउ अ ट्रांसलेटर ऐप इज एबल टू ट्रांसलेट आइदर पैराग्राफ फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इन अ मैटर ऑफ मिलीसेकेंड्स, या फिर जो Amazon है वो कम्स अप होता है विद आइडियाज what you should buy next, and those suggestions are exactly what you need but just never knew it before. So all of these become possible because of deep learning. Deep learning एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग का जो यूज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, एंड ये वर्क करता है इन द सेम वे एज ह्यूमन ब्रेन वर्क. ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम न्यूरॉन्स जहाँ पे इट्स जस्ट नथिंग बट वो क्या है, ब्रेन सेल्स है. तो डीप लर्निंग यूज करता है मल्टीपल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का, एंड जो न्यूरॉन्स है ये अरेंज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. Output of every layer is the input to the next layer. Some common applications of deep learning are virtual assistant. Virtual assistant of online service providers जैसे Alexa, Siri या फिर Cortana, ये सब deep learning यूज करते हैं to understand your speech and language human use when they interact with them. फिर आता है ट्रांसलेशन ऐप जैसे गूगल ट्रांसलेटर, ये सब भी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट बिटवीन लैंग्वेजेस, एंड ये हेल्पफुल होता है फॉर ट्रैवलर्स, बिजनेस पीपल्स एटसेट्रा. न्यूरल नेटवर्क एक ब्रांच है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एसोसिएटेड है विद द यूज ऑफ न्यूरोलॉजी टू इनकॉर्पोरेट कॉग्निटिव साइंस इन हेल्पिंग कंप्यूटर सिस्टम्स एंड मशीन्स ताकि वो टास्क को एग्जीक्यूट कर सके. न्यूरल नेटवर्क जो है वो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन ब्रेन को, where the human brain comprises an infinite number of neurons, and to code artificial brain neurons into a system or a machine to solve complex problems.
न्यूरॉन जो है वो एक न्यूरल नेटवर्क है, वो एक मैथमेटिकल फंक्शन है whose work is to gather and classify information according to a particular structure. जो नेटवर्क है वो स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करता है कुछ स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स को सच एज रिग्रेशन एनालिसिस टू अकम्प्लिश टास्क. न्यूरल नेटवर्क हेल्प करता है मशीन्स की प्रोसेस की टू हाउ द ह्यूमन ब्रेन ऑपरेट्स, एंड ये ऑल्सो इन्वॉल्व करता है इम्प्लीमेंटिंग मैथमेटिकल फंक्शंस एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स ताकि वो सॉल्व कर सके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को. इसका यूज किया जाता है इन द फील्ड्स सच एज रिस्क एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, फ्रॉड डिटेक्शन, फोरकास्टिंग एंड स्टॉक एक्सचेंज प्रिडिक्शंस. एक्सपर्ट सिस्टम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है जो रिक्वायर करता है ह्यूमन एक्सपर्टाइज या फिर एक्सपीरियंस को ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. तो ये परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिजाइन और मॉनिटर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं एंड मेनी मोर टू कॉपी द थिंकिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट. यहाँ पे जो बेनिफिट है ऑफ दिस सिस्टम इज दैट द एक्सपर्ट नॉलेज बिकम अवेलेबल. ये मेनली यूज किए जाते हैं इन द मेडिकल फील्ड टू ऑपरेट मेडिकल फैसिलिटीज एंड डिटेक्ट वायरस इन्फेक्शन. इट इज ऑल्सो यूज इन बैंकिंग सेक्टर फॉर लोन और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड कोडिंग गेम्स एटसेट्रा. रोबोटिक्स रोबोटिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है एआई का जो डील करता है विद डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ रोबोट्स. रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल मशीन्स जो एक्ट करते हैं एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट्स एंड दे परफॉर्म टास्क इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट विद द एम ऑफ एक्चुअलाइजिंग रिजल्ट्स. यहाँ पे ये एबल होते हैं टू कैरी आउट द सीरीज ऑफ एक्शंस ऑटोनॉमसली और सेमी ऑटोनॉमसली. देयर आर थ्री मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक रोबोट को. रोबोट इंटरैक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ विया सेंसर्स एंड एक्यूरेटर्स. रोबोट्स आर प्रोग्रामेबल, रोबोट्स आर ऑटोनॉमस या फिर सेमी ऑटोनॉमस. जो एम होता है ऑफ डिप्लॉइंग रोबोट्स वो होता है टू हेल्प ह्यूमंस विद टेडियस एंड बल्क टास्क. एंड ये जो टास्क है ये इन्वॉल्व करते हैं कंट्रोल of the computer system, information transformation, manufacturing of automobiles. It is used by NASA to move heavy objects in space. Robots are artificial agents जो perform करते हैं instructions given by humans. Now domains of AI. AI के क्या क्या domains हैं? AI domains refer करते हैं main branches of AI को, and three domains are data science, natural language processing and computer vision. Now data science क्या है? Data science is the extraction of actionable insights from raw data. In simple words, data science जो है वो होता है study of data. Now, what is data? Data collection होता है raw facts का जिनको प्रोसेस किया जाता है ताकि हम उसकी इंफॉर्मेशन बना सके. Data can be in the form of numbers, words, symbols and even pictures. Numbers like this, words like this and symbols like these. तो डेटा साइंस एक स्टडी होती है जिसमें हम नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डेटा, एंड ये हेल्प करता है हमें टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स डेटा प्रॉब्लम्स यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस. डेटा साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो फोकस करता है नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम द डेटा सेट्स विच आर टिपिकली ह्यूज इन अमाउंट. ये एनकम्पास करते हैं एनालिसिस, preparing data for analysis and presenting findings to inform high-level decisions in an organization. As such, ये incorporate करते हैं skills from computer science, mathematics, statistics, information visualization, graphics and businesses. Example है data science का. First is price comparison website. तो अगर if you have ever used these websites, आपको पता होगा that जो convenience है of comparing the price of a product from multiple vendors at one's place. Now ये जो websites है they are being driven by lots and lots of data. Some examples of price comparison websites are Price Grabber, Price Runner, Junglee, Shopzilla, etc. Data science का use क्या है? It is used in various areas. Some of them are as follows. Data science को use किया जाता है by medical professionals to find new ways to understand diseases, practice preventive medicines, diagnose disease faster, explore more treatment options. Data science useful है in every industry, but it may be most important in cybersecurity. International cybersecurity firm Kaspersky is using data science and machine learning to detect over 360,000 new samples of malware daily. Data science को use किया जाता है in self-driving cars to adjust the speed limits, avoid dangerous lane changes, and even take passengers on the quickest route. नेक्स्ट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ये हेल्प करता है कंप्यूटर्स को
to communicate with us using natural language जैसे English. Now ये simply this is simply एक process जिसमें making of computer system and machines to understand basic human interactions. ये जो process है ये involve करता है machine receiving human sounds from interactions and converting it into text format so that वो easily readable हो और understood किया जाए. And ये जो text है ये इनको पे convert किया जाता है into the components by a computer system that will make them understand human intention. For example, NLP possible करता है computers को to read text, hear speech, interpret it, measure thoughts and emotions, determine which part are important. Email filters. Email filters started out with spam filters uncovering certain words or phrases that signal a spam message. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ये असाइन करता है प्री डिफाइंड कैटेगरी को टू अ डॉक्यूमेंट एंड ऑर्गेनाइज करता है उसको टू हेल्प यू फाइंड इंफॉर्मेशन यू नीड और सिंप्लीफाई सम एक्टिविटी. कंप्यूटर विजन ये एक फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एनेबल करता है कंप्यूटर्स को मशीन्स को टू derive meaningful information from digital images, videos and other visual inputs that take actions, make decisions and recommendations based on the information. ये allow करता है कंप्यूटर को to see, recognize, process images the same way as human vision does. For example, if AI is like the brain of computer and machines, computer vision is like the eyes of the computer. कंप्यूटर विजन को क्या चाहिए होता है लॉट्स ऑफ डेटा चाहिए होता है एंड रन एनालिसिस ऑफ डेटा ओवर एंड ओवर अंटिल ये डिसर्न करता है डिस्टिंक्शंस एंड रिकॉग्नाइज करता है इमेजेस को. कंप्यूटर विजन के यूजेस क्या हैं? कंप्यूटर विजन को मेनली यूज किया जाता है फॉर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम्स एंड टू रिकॉग्नाइज द फेसेस इन इमेजेस एंड वीडियोस. एप्लीकेशन एरियाज जैसे गूगल फोटोज, स्पैम चैट, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब भी इसको यूज करते हैं. कंप्यूटर विजन ऑल्सो हेल्प करता है इन एनवायरमेंट परसेप्शन सच एज एनालाइजिंग वीडियोज, इमेजेस और वीडियो फीड्स फॉर आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स एंड रिसीविंग द एनवायरमेंट. एप्लीकेशन एरियाज जैसे होम सिक्योरिटी सिस्टम, ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम, ड्रोन बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम एटसेट्रा. Computer vision is also helpful in smart interactions to supply input to computers and mainly इसको use किया जाता है in programs, systems, games designed for differently abled individuals, etc. Now example क्या क्या है computer vision के? Self driving cars, face filters. Now self driving cars जैसे CV systems को scan करते हैं, live objects को analyze करते हैं based on the weather car decides to keep running or to stop. फेस फिल्टर्स कुछ एप्लीकेशंस है जैसे स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, यहाँ पे लॉट्स ऑफ फीचर्स है ऑफ कंप्यूटर विजन एंड जो एप्लीकेशन है ऑफ फेस फिल्टर्स इज वन अमंग देम. फेस फिल्टर एल्गोरिदम इज एबल टू आइडेंटिफाई फेशियल डायनामिक्स ऑफ द पर्सन एंड अप्लाई फेशियल फिल्टर सिलेक्टेड. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इंटेलिजेंस है perceiving, synthesizing and inferring information demonstrated by machines. AI is a combination of various computer science fields. मशीन लर्निंग एक बहुत कॉमन फॉर्म है एआई का. सुपरवाइज लर्निंग एक टाइप ऑफ लर्निंग है विच मेक मशीन ट्रेन्ड यूजिंग लेबल्ड डेटा. रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज करता है ट्रायल एंड एरर मेथड टू ट्रेन एल्गोरिदम्स एंड क्रिएट मॉडल्स. डीप लर्निंग एक सबसेट होता है मशीन लर्निंग का. लेट्स डू एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. So first is data can be in the form of words, numbers, both. Machine learning is ability to learn from experience, ability to learn and improve from output, both A and B. Example of computer vision is self-driving cars. Which of the following works in the same way as human brain works? Deep learning. NLP is used for language translation. Let's do fill in the blanks. AI domain that is capable of communicating between people and machine is called NLP. Deep learning uses multiple artificial neurons. A dash is a neural network is a mathematical function. Neuron. Dash are artificial agents that can perform the instructions given by human robot. Let's do true false. AI domains refer to the main branches of AI. True. Full form of NLP is natural language processor. False.
Siri, Alexa, Cortana, Google Assistant are capable of having conversation with a human. True. Data science is used for language translation from one language to another. False. So students, this was a complete chapter about artificial intelligence. I hope the chapter is clear to you. Do revise it once again at your own and learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.